Assalamualaikum, sir. My team name is Team Tripod, and we have 3 members in this group. I am Laiba Ahmed, and I have 2 other members, Aliza Ahmed and Mohammed Ashraf. So basically, right now, cities they get flooded with messy phone calls and emails about potholes, broken lights, trash, damaged roads. बहुत ऐसे मसले चल रहे हैं कराची में, and we know that. But the problem is that we don't have an easy way to track or fix them. So that is why we built this app, this web app. It's called SafeStreet. It basically what it does. It solves this issue by using a simple map and AI to organize all these reports automatically. आप जैसे ही you open this website, you go to create an account. यहाँ पे this opens. You create an account. अब इसमें we have 4 options: citizen, field worker, supervisor and admin. For example, मैं एक citizen हूँ. मैं अपनी details डालती हूँ कि मेरी ये details हैं. Because मेरा already account बना हुआ है, change this. And मैं यहाँ पे अपना password डालती हूँ. And I create an account. जैसे मैं अकाउंट क्रिएट करती हूँ तो ये मुझे इस पोर्टल पे ले आता है. दिस इज़ द सिटीजन पोर्टल. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 तलवार पे खड़ी हुई हूँ एंड आई सी कि यहाँ पे एक बहुत डीप पॉट होल है. अब आई हैव टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट, राइट. तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी प्लस रिपोर्ट इंसिडेंट करूँगी. हम रिपोर्ट इंसिडेंट पे गए और यहाँ पे वी हैव द कैटेगरी. ठीक है, यहाँ पे ये हमारी कैटेगरी है फॉर नाउ. आई क्लिक ऑन पॉट होल और यहाँ पे मैं एक टाइटल डालूँगी, डीप पॉट होल at 3 तलवार. मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि क्या है, मसला क्या है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट दैट इट इज़ नियर HBL टावर्स, वरना कोई और भी इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. मैं लिख दूँगी नेक्स्ट एड लोकेशन. मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल एड्रेस डालना ऑप्शनल है, बट अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं. 3 तलवार पे wherever I have seen that मैं उस पर एड्रेस डाल दूँगी. Now for location, if I click my location तो it is going to track exactly where I am और वो लोकेशन वो यूज़ कर लेगा. उसकी पिन लोकेशन एग्जैक्ट जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वो यूज़ कर लेगा. बट फॉर नाउ मैंने जैसे कहीं और ऐसी कहीं भी रैंडम चूज़ कर दी. एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम एक फ़ोटो एविडेंस भी डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं कि भाई इतना बड़ा पॉट होल है. यू कैन सी दैट ये पॉट होल है एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. आई सबमिट द रिपोर्ट. रिपोर्ट सबमिट हो रही है एंड यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट हो गई. एंड देन यहाँ पे लिखा आएगा दैट योर इंसिडेंट हैज़ बीन रिव्यूड एंड रिसीव्ड एंड इज़ बीइंग रिव्यूड. ये रेफरेंस नंबर है फॉर अस टू ट्रैक और प्रोग्रेस, हमारी जो रिपोर्ट की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए. एंड आई गो टू बैक टू माई रिपोर्ट्स तो आई सी कि मेरी रिपोर्ट्स में यहाँ पे पहली रिपोर्ट आ रही है. ये हाई वाली जो चीज़ है, जो ये स्टेटस सेट करी है, इट इज़ सेटिंग इट अकॉर्डिंगली, मतलब जो आप नाम जैसे दे, बिकॉज इट इज़ डीप पॉट होल, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी फिक्स राइट अवे. दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग हाई का स्टेटस. प्लस यहाँ पे इसको ओपन लिखा हुआ है तो रिपोर्ट में जो मेरी प्रोग्रेस है वो इस तरह प्रोग्रेस को मैं देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल ओपन लिखा है. जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे ये रिजॉल्व लिखा आ जाएगा. नाउ आई गो बैक टू द साइन इन वाला जो पोर्टल है यहाँ पे एंड रेस्ट will be explained by my other team members. Assalamu sir, my name is Mohammed Ashad and I'll be explaining the rest. So first we can create an account of our supervisor. We'll have reported the incident on citizen and we can the incident will go to the supervisor who will then assign the incident to the field worker. So I already have a account, so I'll be logging in with that. Okay, so here we have a map of all the incidents. Here I can see all the categories of the incident, like potholes, damaged roads, broken lights. So here we have a pothole, a deep pothole at Teen Talwar. Here we have the incident list. You can view it as a list as well. Okay, so like here we have like deep pothole at Teen Talwar. We have its priority, description, and we have the AI classification. So basically what happens is it'll detect the name and the description and the type of the incident and classify is it like in which department it lies and in which in what is the priority of it. So this priority high is given by the AI. Okay, here I can assign the field worker to whom to assign the task.
And below this is manually overriding the priority and the department that the AI classified. So here I'll assign it to Alisa Ahmed, and this is done. Now this will be listed in her account, in her s- um, field worker account. And over here I can also manually change the status of this incident. So I can click on en route if the it has been assigned and you know that someone is en route. Okay, I'll sign out right now and Alisa will explain the field worker. My name is Aliza Ahmed, and I will be explaining the role of field worker in our project, SafeStreet. So, when the worker logs in or signs into their account, a dashboard will appear जहाँ दो मेन चीजें आएंगी एक active tasks और resolved tasks आ रहे होंगे. So resolve task is basically a history of all the tasks that the worker has completed and resolved. And active tasks वो होंगे जो अभी supervisor ने जैसे assign किए हुए हैं specific worker को. So the supervisor receives tasks from citizens, वो complaints receive करता है and basically kind of assigns those complaints to workers of specific departments or fields that will work to solve that issue or task. So the supervisor has currently assigned a sinkhole task, massive sinkhole on High Street 4. तो अब हमारे पास ये task है assigned. We will click on it and we will be given a description of the task along with an update status. And हमारे पास एक navigate का button भी आ रहा है that basically helps the worker navigate where the issue is. तो it is near this area. ये यहाँ title है, यहाँ description है of what the task is, what the issue is, and this has been assigned to the specific worker. And basically इधर हमारे पास एक update status दिया हुआ है. What the worker has to do is that to notify the supervisor of the progress it has to update or they have to update their status. So for example, abhi worker ja raha hai, yeah, they are on their way to the location. So I can write I am on my way to the location. And hum en route दबा देंगे. So what this does is it changes the status from assigned to en route. Now, after you have the worker has reached the place, it will start or they will start their work. So we can write uh, have reached the location, starting my work. And on-site दबा देंगे तो हमारा status change हो जाएगा to on-site. So this is basically updating the status and progress notify कर रहा है whatever the worker is currently doing and how far they have reached with their task. So finally, when they are on the site and they have completed their task, they can write resolved task or issue in the box and click resolve. तो हमारे पास एक और box आ जाएगा नीचे. Now what this box is basically it writes a message to the citizen notifying them कि ये task complete हो चुका है, this issue has been resolved, and this message is then forwarded to the citizen to basically assure them that the complaint they had filed for has been heard and has been resolved. Now, sometimes workers directly messages नहीं लिख सकते हैं. कभी-कभी circumstance ऐसी होती है कि वो नहीं लिख सकते हैं. Sometimes they can't formulate a message. So we have applied this button, which is basically it auto drafts a message using AI. So if I click on this, it will give me an AI generated message to the citizen that I can send to the citizen as a worker. And if I confirm the resolution, हमारा task resolved हो जाएगा. We can see it over here. This is our task. It has been resolved and that message has been sent to the user or the citizen.